ये तो मैं लाइव हूँ। नाइस। सबसे पहले टर्मिनल खोलते हैं हमारा। एनादर। हाँ। अब खोलते हैं ब्राउजर और चलते हैं पोर्टुगल। प्रोक्सी हमारी ओपन होनी चाहिए। नाइस एंड एक्सेस इज from base is site scripting. I do all topics and SQL authentication of command access control server side accessing benefits like site topics go to topic and let's start learning it. What is XSS? XSS is a web security vulnerability that allows an attacker to compromise the interactions that user have with a vulnerable application. It allows an attacker to circumvent the same origin policy, which is designed to segregate different websites from each other. Cross-site scripting vulnerability normally allow an attacker to masquerade as a victim user to carry out any actions that user is able to perform and to add any and to access any of user's data. If the victim has privileges access within the application, the attacker might gain full access control over the application functionality and data. तो आसान भाषा में अटैक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है हमारी जो कि एक्सएसएस के नाम से जानी जाती है, ये एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है। इस वल्नरेबिलिटी से अटैकर इंजेक्ट कर सकता है मलिशियस स्क्रिप्ट विक्टिम के ब्राउजर के अंदर और विक्टिम को हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं दूसरे पेजेस पर या फिर कुछ उन्हें फोर्स कर सकते हैं डाउनलोड करवाने के लिए जावास्क्रिप्ट की मदद से उनकी हम कुकीज स्टील कर सकते हैं या फिर उनके बिहाफ पे हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यूजर के पास कोई डेटा है मतलब कोई वो है हमारे पास प्रिविलेज है यूजर के पास जो कि हमारे उस पे है जिसने हमारे कॉम्प्रोमाइज वेब पेज पे आया तो हम उसका प्रिविलेज भी ले सकते हैं जिससे पूरी वेबसाइट भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मैं एक बार दिखा देता हूँ डायग्राम में। डायग्राम डायग्राम मेथड ओके डायग्राम डॉट नेट इसको लोड होने देते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ब्राउजर हो browser. Let's take this as a browser. जैसे हमारे ब्राउजर है तो अगर इस ब्राउजर पे मान लो यहाँ पे कोई भी एक पैरामीटर है या फिर कोई भी इस वेबसाइट के अंदर पेज है से ये पेज है एक इसके अंदर
vector vector advanced vector right। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम जैसे एज ए यूजर यहाँ पर हैं, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर है जैसे https example.com and then question mark search is equal to, यहाँ पर हमारा पेलोड आ जाएगा। तो हमारी तीन तरह की एक्सेसेस होती है, क्रॉस चेक स्क्रिप्टिंग तीन तरह की होती है। पहले तो हमारी स्टोर्ड एक्सेसेस हो गई, जिसमें स्टोर एक्सेस होता है जिसमें चीजें सर्वर पे स्टोर हो रही होती है। जैसे सर्च का इनपुट है तो हमारे डेटाबेस से वो फेच करेगा, तो मतलब कुछ भी जैसे हमने कोई कमेंट करा तो वो उसके डेटाबेस पे स्टोर होगा सर्वर की, या फिर उसके सर्वर पे स्टोर होगा। तो उस पे स्टोर हो रहा है तो हमारा स्टोर्ड एक्सेस हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड होता है जो यूआरएल पैरामीटर वगैरह में हो, या फिर कोई इनपुट के थ्रू हो जाए, ऐसे ये हमारा रिफ्लेक्टेड होगा। उसके बाद डोम बेस्ड हो गया जो डोम के जरिए होता है। पेलोड हमारा उस सब में सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो जैसे हमने इस पेज पे हमारा पेलोड लगा दिया और अगर ये सर्वर में स्टोर हो रहा है, तो अगर कोई दूसरा आता है तो ये इसका ओरिजिनल पेज नहीं दिखेगा, ये हमारा पेलोड दिखेगा। अब यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो इस यूजर को मेरे किसी थर्ड पेज पे लॉगिन करवा सकता, किसी थर्ड पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकता हूँ। जैसे ये मेरा कोई थर्ड मलेशियस पेज है, तो अगर यूजर यहाँ से इस पे गया तो फिर वो यहाँ से इधर इस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे उसको लगेगा कि ये जेन्युइन साइट का है, और अगर लॉगिन करने को मांगेगा तो पासवर्ड दे देगा, जो कि ये मेरे को भेज देगा। तो बेसिकली यही है हमारा एक्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। हाउ डज एक्सेस वर्क? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्क बाय मैनिपुलेटिंग अ वेब vulnerable web site so that it returns malicious JavaScript to user। जैसा कि मैंने कहा कि ये malicious JavaScript रिटर्न करता है यूजर पे when malicious codes execute inside a victim browser। जो हमारा malicious कोड है एग्जीक्यूट होगा victim browser के अंदर, the attacker can fully compromise their interactions with the application। जो अटैकर है पूरी उसकी इंटरेक्शन कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, ये मैंने जो बताया सेम ही है। जैसे हमारा नॉर्मल यूजर है वो इस पे गया, हमारे अटैकर ने ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, तो उसने लॉगिन का डेटा भेजा, वो इस पर आ गया। XSS proofs of cross-site scripting proof of concept। You can confirm most kind of access vulnerability by injecting a payload that causes your browser to execute some arbitrary JavaScript। It's long been common practice to use alert function for this purpose because it's short, harmless, and pretty hard to miss when it's successfully called. In fact, you solve the majority of our XSS lab by invoking alert in a simulated victim browser। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक्सएसएस का हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अपने ब्राउजर में अगर रन हो रहा है तो उससे देख सकते हैं कि एक्सएसएस है या नहीं, कंफर्म कर सकते हैं। और मोस्टली हम अलर्ट का यूज करते हैं। मोस्टली पोर्टसिगर की लैब्स हम अलर्ट के साथ ही सॉल्व करेंगे। अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ स्लाइड इज इन योर क्रोम, इफ यू use Chrome version 92 onwards, cross version iframe, which are preventing from calling alerts. As these are used to construct some more advanced access attack, you will sometimes need to use an alternative POC payload. In this scenario, we recommend the print function. If you're interested in learning more about this change and why print function, check our blog post on this subject. As simulated victim, iLab uses Chrome, we aim effect labs so that they can also be solved using printf। ओके, इसको चेकआउट कर लेते हैं। printf is that long live printf। Cross-site scripting and alert function have gone hand in hand for decades. What to prove you can execute arbitrary JavaScript, pop an alert. You want to find an excessive cross-site scripting vulnerability the lazy way? Inject alert
invoking payload everywhere and see if alert anything pops up. However, there is trouble brewing on the horizon. Malicious admins have been abusing our beloved alert to distract and social engineer visitors from inside their iframe. Google Chrome has decided to tackle this by disabling alert for cross-domain frames. Cross-domain iframes are often built into website delivery and are also near essential component of certain relative advanced access attacks. Okay, so iframe जो है हमारे क्रॉस डोमेन आईफ्रेम जो है गूगल क्रोम ने बंद कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे थे सोशल इंजीनियरिंग वगैरह के लिए विजिटर्स को उनके आईफ्रेम के अंदर क्रोम 92 के बाद अलर्ट बेस्ड पीओसीज जो है नहीं है इनेबल होंगी और इनविजिबल होंगी एनीवन जो कि यूज कर रहा है अलर्ट बेस्ड डिटेक्शन टेक्निक What's next? The obvious workaround is to use a prompt or confirm, but unfortunately, Chrome mitigation blocks all dialogues, triggering the DNS pingback to a listener. Style is another potential approach, but less suitable as a POC due to config requirements. We also ruled out our console.log as a console log function often proxied and disabled by JavaScript obfuscators. It's quite funny that it's quite funny that this protection against showing dialog cross-domain blocks alert and rooms, but Yosuke pointed out for our basic authentication, this was the current workshop. We need alert alternative that was simple, setup free, and easy to remember. Highly visible even when executed in invisible iframe. After a week of intensive research, we are thrilled to bring you print function. Okay. We'll be updating our Web Security Academy labs to support print this solution shortly. The XSS cheat sheet will also be updated to reflect the new print payload. When using cross-domain iframes, we'll keep alert when there's no iframe involved for now. Long live print. Okay. As I said, यहाँ पर reflected access होता है, stored होता है और DOM होता है. Access है reflected में हो गया जब malicious script comes from current HTTP request. Stored हो गया comes from website database. और डोम हो गया जब वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्लाइंट साइड कोड में रेदर देन सर्वर साइड कोड. डोम डोम बेस में हमारा सर्वर साइड का लेना देना नहीं होता, वो हमारे क्लाइंट साइड में सारा काम होता है. रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देख लेते हैं. रिफ्लेक्टेड इज द सिंपलेस्ट वैरायटी ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. इट arises when an application receives data in an HTTP request and includes that data within the immediate response in an unsafe way. जैसे हमारा ये पेलोड है मैसेज में ऑल इज वेल, हमने यहाँ पे पैराग्राफ डाल दिया जिसका स्टेटस है ऑल इज वेल. Application doesn't perform any other processing of the data, so attacker can easily construct an attack like this. Paragraph status, script tag, यहाँ पे alert आ गया, print आ गया और script tag close हो गया. If the browser visits the URL constructed by attacker, then the attacker script can execute the user's browser. When attacker script executes in the user browser, in the context of the user session with the application at that point, the script can carry out any action and retrieve any data to see which user has which access. चीट शीट में दूसरे उसमें खोल लेता हूँ. Stored XSS, stored cross-site scripting arises when an application receives data from an untrusted source and include that data within its later HTTP response in an unsafe way. The data in question might be submitted to the application via HTTP request. For example, commenting on a blog post, user nickname in a chat room, or contact detail on a customer. In other cases, the data might arise from untrusted source. For example, a webmail application displaying messages received over SMTP. जैसे हमारा पैराग्राफ हेलो हो गया, पैराग्राफ आ गया, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया, कमेंट बैड स्टफ, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, पैराग्राफ बंद. DOM based XSS arises when application come from certain site
contains some client-side JavaScript that processes data from an untrusted source in an unsafe way. जैसे हमारा var सर्च होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट, हम एलिमेंट आईडी ले रहे हैं सर्च की उसकी वैल्यू के साथ डॉट वैल्यू। फिर जो हमारा रिजल्ट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी रिजल्ट and results.inner.html we search for plus search. If an attacker can control the value of input field, they can easily construct a malicious value that causes their own script to execute. You search for image tag लगाया, source ले दिया 1 जो कि obviously wrong है, और error पे हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे अपना stuff ले लिया क्योंकि obviously हमारा source गलत है, जो कि 1 कोई source नहीं है तो on error execute हो जाएगा। XSS यूज हो सकता है हमारा impersonation के लिए, any action user के behalf पे, read any data and etc. Impacts हमारे वही हो गए, how to find and test for XSS. The vast majority of XSS vulnerability can be found quickly and reliably using Worksheet Web Vulnerability Scanner. Manually testing for reflected and stored XSS involves submitting some simple unique inputs such as short alphanumeric string into every entry point in the application, identifying every location where the submitted input is returned in HTTP responses, and testing each location individually to determine whether suitably crafted input can be used to execute arbitrary JavaScript. Content Security Policy CSP. Content Security Policy CSP is a browser mechanism that aims to mitigate the impact of cross-site scripting and some other vulnerabilities. If an application that employs CSP contains excess cross-site scripting like behavior, then CSP might hinder or prevent exploitation of the vulnerabilities. Dangling markup injection. Dangling markup injection is a technique that can be used to capture data cross-domain in situations where full cross-site scripting exploit is not possible. यहाँ पे हमारे preventions, यहाँ पे questions, how does access work हो गया, testing हो गया हमारा। अब चलते हैं रिफ्लेक्टेड पे। सबसे पहले गेट ऐप कर लेते हैं, इसको बंद कर रहा हूँ मैं, इस पे बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा टाइटल है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस इनटू एचटीएमएल कॉन्टेक्स्ट विद, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, ओके। ये सिंपल रिफ्लेक्टेड क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेबिलिटी है सर्च फंक्शनैलिटी के अंदर। हमें अलर्ट फंक्शन कॉल करना है इसको सॉल्व करने के लिए। आई डोंट थिंक मेरे को इसके लिए भी वर्कशीट खोलने की जरूरत पड़ेगी, इसको लॉन्च होने देते हैं। तो हमारा पेलोड तो सबसे पहले हो जाएगा स्क्रिप्ट, जिससे हम जावास्क्रिप्ट एनेबल करते हैं। फिर हमारा अलर्ट, हमें क्या शो करना है, एक्सएसएस शो कर देते हैं, और फिर स्क्रिप्ट बंद कर दी हमें, स्क्रिप्ट बंद हो गई। सर्च करते हैं, एक्सएसएस शो हो गया है, ओके करते हैं, दैट्स ऑल हो गई है। इसको क्लोज कर देते हैं। इम्पैक्ट्स हमारे हो गए थे। स्टोर्ड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज स्टोर्ड? When an application receives data and a student response, post comment full plus Carlos is equal to normally.net paragraph with stored एक्सेस विद नथिंग इंपोर्टेड पे चलते हैं, एक्सेस करते हैं। अलर्ट फंक्शन व्हेन ब्लॉग पोस्ट रिव्यू के ब्लॉग पोस्ट के अंदर है, इसको लोड होने देते हैं। हमारे एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर चलते हैं।
इसके अंदर नीचे चलते हैं। स्क्रिप्ट, प्रिंट, वैसे मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, मेल, एनीवे, ईमेल, एनीवे, वेबसाइट तुम्हारी है नन, पोस्ट डॉट कॉम, पोस्ट आई एस टी डी पी वन डॉट कॉम। ओके, कुछ नहीं हुआ। अलर्ट, पोस्ट, दोबारा इस पे चलते हैं। व्यू पोस्ट, ओके, हमारा प्रिंट हो गया है। कैंसिल, इसको अगर मैं रिलोड करूँ, सबसे पहले हमारा हाई हुआ, फिर हमारा प्रिंट हो गया, तो हमारी लैब सॉल्व हो गई है वहाँ पे। प्रेस करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। इंटैक्स हमने देख लिए थे, स्टोर देख लेते हैं हम। रिफ्लेक्टेड, स्टोर हो गया। डोम देख लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। इसको न्यू टैब में ओपन करके एक्सेस कर लेते हैं, बाकी पहले से ही लोड हो जाएंगे। अब यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। Resistant JavaScript takes data from attacker controllable source such as URL and pass it to a string that supports dynamic code execution such as email and inner HTML. This enables attacker to execute malicious JavaScript, which typically allows them to hijack another user account to deliver row-based accesses. You need to place data in a source that is propagated to string and calls execution of arbitrary JavaScript. The most common source of DOM for XSS URL is typically accessed with window.location object. अटैकर कंस्ट्रक्ट कर सकता है लिंक विक्टिम को सेंड करने के लिए वल्नरेबल पेज में। पेलोड फॉर एचटीएमएल नीचे करते हैं टेस्टिंग एचटीएमएल सिंक्स टू टेस्ट to access with an HTML string, please stand up alphanumeric string in the source such as location.search, then use developer tool to inspect and find where your string appear. Note that browser your source won't work because do access testing because it doesn't take account for changes that have been performed in the HTML by JavaScript. ओके, यहाँ पे चलते हैं। इट यूजेस सर्च क्वेरी, यहाँ पे है कि यहाँ पे मैं यही टैग यूज कर लेता हूँ, सर्च करता हूँ। ओके, ओके, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, H1 व्यू कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा ये स्ट्रिंग में आ रहा है। तो व्हाट इफ H1, यहाँ पे हमने यहाँ पे जैसे सर्च किया तो सबसे पहले हमारा ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है।
तो व्हाट इफ मैं सबसे पहले इसको ऐसे कर दूँ, इसको बंद किया, फिर इसको अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँ फिर करूँ। अब इंस्पेक्ट करो फिर। ओके, लैब तो सॉल्व हो गई है। अगर यहाँ पे मैं हैक की जगह एक्सरसाइज करूँ, सबसे पहले हमने इस टैग को क्लोज किया, फिर एचटीएमएल टैग बंद किया यहाँ से, फिर हमारा स्क्रिप्ट कर दिया इसको सर्च करके, और हमारा एक्सरसाइज भी आ चुका है। टेस्टिंग, एक्सप्लॉइटिंग। That in some situation, document or thread includes some surrounding context to take account for the exploit. You might need to do some existing element before JavaScript payload. Domain access in using location.search. The inner statement doesn't accept script element on any modern browser, nor it will SVG onload event fire. This means you need to use an alternative element like image or iframe. Event handlers such as onload or and onerror can be used to construct with these elements. For example, element dot inner HTML is equal to code then image DOM in document dot write sync using the search inside a selected element. This lab contains a DOM-based cross-site scripting vulnerability in the stop checker functionality. It uses JavaScript document.write function, which writes data on the page. The document.write function is called with the data from location.search, which you control using website URL. The data enclosed with select element. To solve this lab, okay, let's try. Vulnerability हमारी कहाँ थी? Stop checker functionality. You got there? Check stop. इसके लिए बॉक्स में एक कलर को खोलना पड़ेगा तो खोल लेते हैं बॉक्स की। नेक्स्ट स्टार्ट क्लोज प्रोक्सी भी देन हिस्ट्री यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर प्रोक्सी में चेक करते हैं। प्रोक्सी में हमारी एक्सपीरियंस की भाई आ गई। रिपीटर रिफ्रेश डिसेबल यहाँ पे चलते हैं एंड स्टोर आईडी लंडन प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू वाई। इसको क्लोज करके और रिपीटर पे चलते हैं एंड प्रोक्सी पे चलते हैं स्टॉक लंडन लैंडर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू वन एंड रिपीटर सीक्वेंसर से इसको क्लोज कर देते हैं। क्लियर। एक बार दोबारा यहाँ चलते हैं, ये हमारे डिसेबल है। There are variety of six data elements from this vulnerability list.
HDL source in practice using the tricks we have integrated and like if you bring an restricted by necessary additionally and perform the addition with practicing that must be accommodated. वहाँ चलते हैं पूरा 5 days ये फुल दिन का वही वहाँ पे स्क्रिप्ट हम नहीं राइट कर सकते डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रिप्ट हेडर डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन that breaks out of this left. This lab contains 15 vulnerability in the structure functionality. It uses JavaScript document.write function, which writes data onto the page. The document.write function is called from location.search, which you can control using website's URL. Check stop, inspect, storage, memory, style editor, network gigabyte is equal to 1. ये रहा product ID equal to 1. ये रहा DOM explain the code document.write using source code documentation.search. Product ID is equal to 1 script y store document.write element name store ID user parameter store ID. If store document.write plus 2 options for result like plus containing document.write option document.write document.write script for other document and script for other enter करें डायरेक्ट प्रोडक्ट आईडी एक बार इसका सॉल्यूशन अगर देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट फेज पे नोटिस दैट it is JavaScript XSS store ID parameter from location.search source. It uses document.write to create a new option in the selected element. Create a new option in the selected element first object of functionality. Add a store ID query parameter to the URL. Enter a random address else the browser. Listing is on yourself and on the option drop down list. Product is equal to sheet Portswigger और Labs चलते हैं cross site speaking case or sort net scale and information.search
reflected gone, drapery HRU, communication of search, bracket XSS into attribute with angle, brackets HTML encoded. This lab contains a reflected cross availability search block where angle brackets are HTML encoded. The format that ingestion attribute and calls alert function to solve this lab perform a call sign. ये लैब करती है वल्नरेबिलिटी सर्च वल्नरेबिलिटी है सर्च ब्लॉक फंक्शनैलिटी में जहाँ पे हमारे एंगल ब्रैकेट से HTML इंपोर्टेड है एक्सेस करते हैं इसको क्लियर करके उसी में सारे क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे अगर इसको भी सर्च करा जाए क्रिएट सी और स्क्रिप्ट इंस्पेक्ट H1 तो अगर यहाँ प्रीवियस सॉल्यूशन दोबारा बुलाया जाए फिर इंस्पेक्ट H1 कोड लगाना चाहिए H1 zero search result before QE encoder encode as HTML HTML में encode है HTML step टैगनर इनपुट करा गया और अगर दूसरी टैग भी इनपुट कर दिया गया या इसके बीच में इनपुट एज अपनी HTML alert फाइल एक सी करते हैं इसको पेस्ट कर उसको कॉपी करके पेस्ट कर सर्च करा लो एक काम करते हैं XSS cheat sheet डाउनलोड 2020 एडिशन इसको लोड होने देते हैं
Reduce name load the extension browser to search for the right payload, right click control C, copy that. Yeah, flexibility improves now without campus and previously. The string of things is affecting words of the random string of the reflected forth. This one and forth which following payload for escape them. That mode is the first move on mouse over. Right, take us a mouse points. Moves to the HTML element. It is commonly used to create interactive web entities by allowing dynamic change. Okay. Let's then look and search. Okay. सबसे पहले हमने एक सनराइज का सॉल्यूशन राइट करना चाहते हैं सबसे पहले हम यहाँ सबमिट करा एक रैंडम अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग फिर वो स्वीट से उसको इंटरसेक्ट किया वो पर्टिकुलर डेटा इंटर किया रिपीटर में भेजा मेरे पहले में से चल रहा है
एक नोट बहुत पोजीशन हो जाएगा। फिर ट्विटर में भेजा। फिर ऑब्जर्व किया आपने कि रैंडम स्ट्रिंग कोड के अंदर आ चुकी है। फिर एट्रीब्यूट एंड फिर इवेंट हैंडलर। और एरर और माउस ओवर एंड ये हो गया। बैक चलते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। एच डी आर एफ एट्रीब्यूट mention HTML aggregator tools included इसको try करते हैं। Store text tools. This lab contains cross-site vulnerability game comment functionality to solve this lab. Main bug comment for the name is clip। सबसे पहले तो चीट शीट चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें इसको हटाना है और एक्सेस करते हैं। इसको खोल देते हैं। व्यू पोस्ट कमेंट में वर्नेबिलिटी है तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट या फिर कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ। ये हमारा आ गया अपना एनीवे ईमेल आ गई अपनी। एनीवे वेबसाइट आ गई। HTTP नन वर्क स्वीट पोस्ट किया कमेंट। कमेंट आ गया बैक टू पोस्ट करते हैं और हमारी प्रोक्सी बंद कर लेते हैं। ये दोनों को देखा गए हैं। CSRF नेम ईमेल जिसको भेजना है तो इसमें अवेलेबिलिटी होगी और यहाँ पे चेक करने के लिए रिपीट करके चलते हैं। CSRF ये रहा हमारा कमेंट। इस पे अगर मैं स्क्रिप्ट भेजूँ तो हमारा क्या वो आएगा रिटर्न।
ओके, कंफर्मेशन है। जब हमारे ऑथर के नेम पे क्लिक हो रहा है तो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। तो हमारे वेबसाइट पे पोस्ट किया मैंने। तो उसी पे गए। कमेंट। फॉलो रिडायरेक्शन 200। ओके। नाइस। अब अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो स्क्रिप्ट टैग हमारे आ चुके हैं। ये वहाँ पे स्टोर स्टोर ऑन नेक्स्ट। यहाँ चीट शीट। on head HTML typing image region label legend one after print condition on page on before import on before paste on before script execute on before double on before download on begin on cut on cancel on before on click on close on not on copy on get grab exit। मैं चाहता हूँ कि हमारे जब ऑथर के नेम पे क्लिक हो। जो एग्जीक्यूटिव से आइडिया लेते हैं टैक्स की। I want and site पर HCRF और क्लिक। HCRF हमारा इंपोर्टेड है। अगर इस पे मैं क्लिक करूँ और अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखते हुए आ रहा हूँ एक अच्छी फाइल ये मेरा मतलब इस सबसे पहले हमने क्या एक HCRF हैशटैग और क्लिक अलर्ट ऑन क्लिक। अगर यहाँ पे गए कमेंट हमने किया
AHERF, REF over REA, RE, REF, or anyway, anyway, फिर equal to से एक और लगाते हैं name anyway email anyway website and कमेंट पोस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है वेबसाइट से टू ब्लॉक AHERF anyway https://net.com inspect paragraph so intercept the request observe random statements and indicator have been active in solid objects the table with the present polymerase page or input with following payload in the JavaScript library JavaScript alert JavaScript alert will execute whatever JavaScript you put. So JavaScript is triggers the red box with value of 1. Okay, let's try command. Observe that random string in the second repeater tab has been reflected. View the post. Make a second request and also to view the post. Okay, view the post के लिए हम request view post and the request will also get random string. The second repeater tab will be reflected inside a console.
second fake comment. So my second fake comment provides another fake name. We'll provide an email. This really doesn't change the attack, but it's this field complete control over the value of that href attribute. So let's create a new comment and let's see how it's possible to directly execute JavaScript from within that href attribute of the anchor tag. So a second fake comment. So my second fake, an email, this content at href. Let's say JavaScript 1. Back to post. इसको डिसेबल कर देते हैं. That's all. Okay, XSS मेरे को JavaScript इतनी आती नहीं है. Back to all topics करते हैं. Authentication, path, command injection, information disclosure, access, file upload, risk conditions, server-side access injection, NoSQL, API testing, web cage, server-side, client-side, advanced. Authentication, okay. Authentication vulnerabilities. Concepts of authentication vulnerability are easy to understand, however, they are usually critical because the relation between authentication and security. Authentication vulnerability can allow attacker to gain access to sensitive data and functionality. They also expose additional attack surface for further exploits. For this reason, it's important to learn how to identify and exploit authentication vulnerabilities and how to bypass common practice protection measures. In this, we will explain most common authentication mechanism, potential vulnerabilities in this mechanism, inherited inherent vulnerabilities in different authentication mechanism, typical vulnerability that are introduced by their improper implementation. How can you make your own authentication mechanism as robust as possible? तो ये हमारा एक स्लाइड हो गया, एक इमेज आ गई जिसमें अटैकर है जिसने फॉरवर्ड पासवर्ड किया, पासवर्ड डाल के उसने कार्ड लॉस की, जो कि मैं इसको मान के चल रहा हूँ. इस पे गया, इसने पोस्ट रिक्वेस्ट पे भेजी, पोस्ट रीसेट रिक्वेस्ट भेजी वल्नरेबल वेबसाइट पे, जो कि इस पे गई. हेलो कार्लोस, टू रीसेट योर पासवर्ड फॉलोइंग लिंक. ओके, होस्ट इसने इवन यूजर डॉट नेट कर दिया और यहाँ पे इसको टोकन मिल गया. व्हाट इज ऑथेंटिकेशन?
इसको बंद कर लेते हैं एंड ऑब्सीडियन खोल लेते हैं। सी चीट शीट पाइथन चीट शीट नया फोल्डर बना देते हैं नेमलेस और टेक्सटिंग इक्वेशन और इंटीग्रेशन। इसको बंद कर लेते हैं नेमलेस और इंटीग्रेशन जिसका ए कैपिटल होगा। ए कैपिटल हो गया। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में एक नई फाइल बना देते हैं जो ऑथेंटिकेशन में आएगी। यहाँ पर हम कर लेते हैं और what is authentication of authentication. Authentication is the process of verifying the identity of user or client. Websites are potentially exposed to anyone who is connected to the internet. This makes robust authentication mechanism integral to effective web security. Authentication is the process of verifying identity of the user or client. ये हमने कर दिया आंसर। There are three main types of authentication. इसको क्लोज करते हैं। फिर मैं यहाँ पे डॉट बनाने चलते हैं फॉर्मेट कमेंट तो कमेंट फॉर्मेट बोल्ड इटैलिक हाईलाइट इवेंट मैच और फिर ये मैच भी नहीं है मैच भी नहीं होगा। इसको बंद करते हैं तो वैसे यूज लेते हैं डॉट डॉट बनेगा पॉइंट सब पॉइंट यहाँ पे हमारा हो गया थ्री टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। There are three main types of authentication. Something you know, such as password or the answer to security question. These are something called knowledge factors. Something you have. This is a physical object such as mobile phone or security token. These are sometimes called possession factors. And third is something you are or do. For example, your biometric pattern of behavior. These are sometimes called inheritance factor. First is knowledge factor.
हमारा सेकेंड हो गया पोजेशन फैक्टर। And last is inheritance factor. Factor or something. What is difference between authentication and authorization? We can continue. Authentication is the process of verifying that the user is who they claim to be. Authorization involves verifying whether user is also who is using authentication. Verifying or verifying verifying how do authentication vulnerability arises? The most vulnerabilities in authentication mechanism occur in either two ways. The authentication mechanism are weak because they fail to educate properly against brute force attacks. Also, vulnerability, authentication, vulnerability, this because what we do things first, things, brute force properly. And second is
logic flow, or poor coding in mechanism, in implementation, and in implementation, implementation. What is impact of vulnerable authentication? The impact of authentication vulnerability can be severe if an attacker bypasses authentication or brute force their way into another user account. They have access to all data and functionality that compromised account has. If they're able to compromise a high privileged account, such as system administrator, they could take full control over the entire application and could potentially gain internal infrastructure. Vulnerabilities in authentication mechanism. A website authentication system usually consists of several distinct mechanisms where vulnerability may occur. Some vulnerabilities are applicable across all of the context. Others are more specific to the functionality provided. Vulnerabilities in third-party authentication mechanism. If you love to have authentication mechanism and completed name authentication, you want to have for mechanism labs. Vulnerabilities in password-based login. For websites that adopt a password-based login process, users either register or for an account themselves or they are assigned an account by an administrator. This account is associated with a unique username and a secret password. This the user enters in a login form to authenticate themselves. In this scenario, the fact they know the secret password is taken as a sufficient proof of the user identity. This means that the security of the website is compromised if an attacker is able to either obtain or guess the login credentials of another user. This can be achieved in a number of ways. The following sections show how an attacker can use brute force attack and some of the flaw in brute force protection. You will also learn about vulnerabilities in HTTP basic authentication. Brute force attacks. A brute force attack is when an attacker uses a system of trial and error to guess valid username credentials. These attacks are typically automated using word list of username and password. Automating this process, especially using dedicated tool, potentially enables an attacker to make vast number of login attempts at high speed. Brute forcing is not always just a case of making complete random guesses at username and passwords. By also using basic logic or public available knowledge, attacker can fine-tune brute forcing attacks to make much more educated guesses. This considerably increased efficiency of such attacks. Websites that rely on password-based login as their sole method of authenticating user can be highly vulnerable if they do not implement sufficient brute force protection. Brute forcing usernames. Usernames are especially easy to guess if they conform to the recognizable pattern, such as email address. It is very common to see businesses login in this format. First name, last name, and some company.com. However, even if there is no obvious pattern, sometimes even high privileged accounts are created using predictable usernames such as admin or administrator. During auditing, check whether the website discloses potential username publicly. For example, are you able to access user profile without logging in? Even if the actual content of the profile is hidden, the name used in profile is sometimes the same as the login username. You should also check HTTP responses to see if any email address are disclosed. Occasionally, responses contain email address of high privileged users such as administrator or IT. Username enumeration. Username enumeration is when an attacker is able to observe change in website behavior in order
to identify whether a username is valid or not. Username validation. Start. Username enumeration typically occurs either on login page when you enter a valid username but incorrect password on a registration form when you enter a username that is already taken. This greatly reduces time and effort required to brute force a login because the attacker is able to quickly generate a shortlist of valid usernames. While attempting to brute force a login page, you should pay particular attention to any difference in status codes. Status code. During brute force attack, the returned SPD status code is likely to be same for vast majority of cases because most of them will be wrong. If a guest returns different status code, this is strong indicator that username was correct. It is best practice for websites to always return the same status code regardless of the outcome. Second is error messages. Sometimes the return error message is different depending on whether both the username and password is incorrect and only the password was incorrect. It is best practice for websites to use identical generic message in both cases. Response time. If most of the requests were handled with a similar response time, any that debate from this suggested something different was happening behind the scene. This is another indicator that the guess might be correct. Let's go the labs, open the terminal, cd, opt, sudo java, and खाली लॉगिन करते हैं इसको क्लोज करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट उसी पे चलते हैं इसको ऑफलाइन देंगे अभी सबसे पहले लैब्स की हम टाइटल पढ़ते हैं ओके यहाँ पे हमारा एन्यूमरेट करना है डिफरेंट रिस्पॉन्सेज पे This lab is vulnerable to username enumeration and password brute force. It has an account with a predictable username and password, candidate username, and candidate password. To solve this lab, enumerate a valid username, brute force this user's password, then guess their account page. Enumerate a valid username, then उसका password brute force करना और access करने का account page लिखिए इसको लोड होने देते हैं मैं अकाउंट पे चाह रहा हूँ लॉगिन करने के लिए और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूंगा पासवर्ड भी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ और यहाँ पर
मैं इसको ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ। मैं इसको लॉग इन करूंगा, जो ऑब्वियसली इनकरेक्ट होगा। यूजर नेम हमारा इनवैलिड दिखा रहा है। कोई बात नहीं, इसको डिसेबल कर देते हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री पे जाके हम लॉगिन की रिक्वेस्ट जो है इंक्लूडर पे सेंड कर दूंगी। इंक्लूडर पे सबसे पहले हम करेंगे इसको ऐड। और ऐड में हमें सबसे पहले यूजर नेम को फोर्स करना है, तो हम यहाँ पर इसकी वर्ड लिस्ट ले लेंगे यूजर नेम की। एंड इस पूरे को कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया, ढंग से कॉपी हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे अटैक हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटस को 200 और रिस्पॉन्स आ रहा है 167 202। सब में हमारा 200 आ रहा है। तो हम रिस्पॉन्स देखेंगे। रिस्पॉन्स 200 ओके। पासवर्ड इन 157। इनवैलिड यूजर नेम। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, वार्निंग ओके, इनवैलिड यूजर नेम। लेंथ अगर मैं देखूँ, इसकी सबसे कम है। और अगर मैं यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड, तो हमारा EDS जो होना चाहिए यूजर नेम, ये मेरा डिसेबल है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे AES टाइप कर दूंगा और पासवर्ड कुछ भी दे दूंगा। तो इस बार इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। तो हमारे यूजर नेम जो है वो ADS की नैनो any.txt। यूजर जो है ADS है। अब मैं दोबारा इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर दूंगा, क्लियर ऑल। और यहाँ पे मैं इसको ADS करके दिस टाइम इसको ऐड कर दूंगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पेलोड कॉन्फ़िगरेशन को। ऑथेंटिकेशन लैब पासवर्ड्स जो कि हमारा कॉपी हो चुके हैं। एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और अटैक स्टार्ट कर दूंगा। और लेंथ में चेक कर दूंगा 185, रिस्पॉन्सेज 302, 302 फाउंड, 200 ओके। इनकरेक्ट पासवर्ड हमारा डिसेबल हुआ। यहाँ पे अगर मैं इसको ADS करूँ और ये पासवर्ड डालूँ, और हमारी लैब सॉल्व हो चुकी है। हमारी ईमेल आ चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 मिनट का स्टार्ट, इसको क्लोज करते हैं। 5 मिनट टाइम अप स्टार्ट। 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं।
ये स्टार्ट करते हैं। लाइट मेरी ठीक है। ओके, लैब सॉल्व हो चुकी है हमारी। तो बेसिकली हमारा रीडायरेक्ट एरर है, सॉरी सॉल्व हो गई। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और फिर इसको भी क्लोज करते हैं। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कैंडिडेट यूजर नेम्स एंड कैंडिडेट पासवर्ड्स और लैब एक्सेस कर लेते हैं। वर्क स्वीट हमारा डिसेबल है। माय अकाउंट एनी पासवर्ड एंड लॉगिन डिसेबल। रिपीटर ये इंक्लूडर विनियर, इसको करेंगे ऐड। यहाँ पे ब्रूट फोर्स होगा तो हमारा यूजर नेम ले लेंगे। यूजर नेम से यहाँ से कॉपी होंगे। यहाँ पे पेस्ट स्टार्ट हो गया। 164 रिस्पॉन्स 10 नॉट सॉल्व माय अकाउंट। If I go here, it was hidden here. Span lab not solved. ये डिसेबल है। इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड आना चाहिए। वो माय अकाउंट। ये आ गया इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। वहाँ पे चलते हैं। इनवैलिड यूजर नेम, लेट्स फिर इसको देख लेते हैं। ओके, स्टिल इनवैलिड। सेकेंड वाला ओके, इसका भी इनवैलिड यूजर नेम है। थर्ड चेक कर लेते हैं। इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। ओके, तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। कॉपी करता। मैं अभी पहले यूजर नेम के हिसाब से जा रहा हूँ। ऑब्वियसली बिकॉज मेरे को नहीं में यहाँ 360 वाले पे देखने के बाद वर्डिंग मैं ए यूपे वाले पे जाऊंगा क्योंकि इसका लेंथ जो है 29 40 है मेरा। वर्डिंग और कम है। एट्टी नाइन वर्डिंग 339 आई एम थिंक लोएस्ट है।
जो कि है अल्बामा। तो मैं इसमें गेड़ा देता हूँ एंड इसको डिस्कार्ड करते हैं। क्लियर। ऐड पासवर्ड्स। कॉपी। क्लियर एंड पेस्ट। स्टार्ट। देन 39 रिस्पॉन्स। ओके, फिर यहाँ पे भी 100 मेरा पास है। ठीक है यहाँ और एक अब क्या के देखते स्टेटस को एरर मैसेज एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। When attack is finished, notice that there is containing error stated. Sort the segment notice something difference with contains a typing error. It's not for server period. Click settings. Okay. Clear. Clear. Clear all. Sniper. Settings button. Settings. Okay, running and settings. That. और सेटिंग्स कौन से क्लिक की हमारी वहां से क्लिक करते हैं अटैक रिजल्ट इन ऑब्जेक्ट
on the payloads. इसको 40 का देते हैं. Paste. Start. यहाँ दोनों का काम किया. Start. Start. Clear all. Add. And start. Settings. Auto. Okay, ये डिफरेंट है. इसका यूजर नेम क्या है? एडम. पासवर्ड इसका देख लेते हैं क्या होगा. इसको बदलते हैं. इसका क्लियर. एडम. ऐड. क्लियर. पासवर्ड. कॉपी. पेस्ट. एंड स्टार्ट करते हैं. इनवैलिड इनवैलिड. सेटिंग्स. ये सेंसिटिव. कौन देखते हैं इसका.
302। इसका पासवर्ड है हैंडल। इसको करते हैं डिस्कार्ड। क्लियर। रिपीटर। फैन। मोनो रिडायरेक्शन। तो मैं लोड में रिलोड करूँगा। AD8 राइट। AD8 5 में बॉस ठंडा। ये छोड़ का लॉगिन करते हैं। और लैब्स और हमारी हो चुकी है। तीसरी देख लेते हैं रिस्पॉन्स टाइमिंग पे। तो फिर में रिस्पॉन्स टाइम देख सकते हैं। हाउ टू व्यू रिस्पॉन्स टाइम इन बोथ वी Portswigger Labs payload response timeout in our response received and viewing the response. ओके इंट्रूडर पे चलते हैं और इन तीनों को हटा दीजिए। प्रोक्सी कंट्रोल ए क्लियर करते हैं इसको। This lab is available to user and share with Mr. Inform about interview. It is again for forcing user crosswalk एक्सेस करके पहले लॉगिन कर लेते हैं। हमारे अकाउंट पे लॉगिन कर लेते हैं विनिया एंड पीटर लॉगिन। यहाँ पे कई नाम चल रहे हैं। पर मतलब उसके लिए तो हमें एक तो हमारे पास तो फिर मैं चैनल वाइज टैगिंग के लिए जरूरत है। प्लस कर दूंगा लैपटॉप मैं बताऊँ लोगो अगर मैं इधर जाऊँ अगर इसको लॉगिन करके इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर कर दूँ इधर लॉगिन डिसेबल तो इसको हम करते हैं बुट फोर्स एंड
पासवर्ड डालते हैं। वो स्वीट हमारा आ चुका है। लॉग इन कर लेते हैं। इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड आ चुका है। वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड इसको भेज देते हैं इंक्लूडर। इसको भेज देते हैं इंक्लूडर पर। इसको डिसेबल कर लेते हैं। कैंडिडेट यूजर नेम एंड कैंडिडेट यूजर नेम दे लेते हैं। पेस्ट एंड स्टार्ट। यहाँ पे चलते हैं। रिस्पॉन्स टाइम टेकन टू बी रिसीव रिस्पॉन्स। ओके रिस्पॉन्स रिसीव हुए। रहा जनरली 158 लिया है। एक्चुअली उसमें हमें आया भी तभी इस पे जाओ। Right challenge. The lab implemented form of IP-based group forcing protect. However, this thing is the purpose of getting a stable request header. इसमें हेडर मैनिपुलेट करना है। Different username notice appear to many invalid request. Identify the Identify that the X forwarded or header is supported, which allow you to spoof your IP address and bypass brute force protection. Continue experiment with passwords. Pay particular attention to response times. Notice that the username is valid. The rough time is around the same. However, when you enter the valid username, the response time is increased depending on the length of the password you enter. Send this to Workspace Intruder for a pitchfork attack. From this attack type data drop down menu, add the X forward for header, add payload position for X forward for, and the username parameter, set the password to very long string of character. In the payload side panel, select one from the payload position. It is also possible using simple single adjustable type, but it's generally much more efficient and first if possible. In the payload side panel, select one from the payload drop-down list, select number, payload type, enter the range 1 to 100, and step to 1, set the mass extent to 0. This will be useful for IPs in question 2. Anyways, to बंद कर रहा हूँ मैं। Fraud brute force protection. It's highly likely that a brute force attack will invoke many failed cases before the attack successfully compromised an account. Logically, brute force protection revolves around trying to make it as sticky as possible to automate the process and slow down the rate at which an attacker can attempt logins. The two most common way for preventing brute force attacks are looking for the account that the remote user is trying to exit if they make too many failed attempts for it.
which is first and second. Both approaches offer very degree of protection, but neither is invulnerable, especially if implemented using flawed logic. For example, you might sometimes find that your IP is blocked if you fail to log in too many times. In some implementations, the counter for the number of failed attempts reset if the IP logs in successfully. This means the attacker would simply have to log in their account every few attempts to prevent this limit from being reached. In this case, merely including your own credentials at a regular interval for the word is enough. मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ पूरे को कॉपी कर रहा हूँ और हर फोन में मैं अपना अकाउंट लॉगिन करवाऊंगा तो मैं यहाँ पे नोट पैड खोल लेता हूँ जैसा कि यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे मैंने इसको डाला विनियम ऐसे नहीं होगा ये तो पासवर्ड की लिस्ट है ना फिर हमें तो मेरा पासवर्ड डालना पड़ेगा जो भी है पीटर एक बार यस को बदल दिया है फिंगर लैंड कर तो इसको कर कह सकते हैं कि हम जस्ट टाइप बाय ये मेरा अकाउंट लॉगिन करें Advanced user we want to always leveraging macro or favorite user extension or responsible for these advanced features. So अभी इसको बंद करके आज के लिए बस इतना ही बने